Hi everyone, my name is Aishwarya and welcome back to Education. Very quickly, we are going to look at the topic of BOP. So let's get started. So BOP economics का बहुत important topic है. कुछ candidates को difficult भी लगता है, and economics is part of your GS3 syllabus. Starting with a question that was asked in 2012. The balance of payment of a country is a systematic record of what? इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. बेसिकली ये पूछ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, क्या चीज़ रिकॉर्ड करता है BOP. ओके, सो ऑप्शंस हैं ऑल इम्पोर्ट एंड ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year, goods exported from a country during a year, economic transaction between the government of the country to another, capital movements from one country to another. If you don't know the answer yet, keep watching the video till the end, and after that I'm sure you're going to answer this correctly, and do not shy away. Comment down below. What is it? What is BOP? So it's a systematic record of transactions in goods, services and assets between the residents and non-residents of a country in a single financial year, and BOP is maintained by the central bank of each country. In our case, BOP is maintained by the RBI. Sorted? Components. So ideally, as per IMF, there should be 3 classifications. पहला होना चाहिए करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिनेंशियल अकाउंट. ठीक है, BOP के स्ट्रक्चर में ये 3 अकाउंट्स मेंशन होने चाहिए. बट इन केस ऑफ इंडिया, आर BOP ओनली कंसिस्ट ऑफ करंट अकाउंट, ओके, एंड कैपिटल अकाउंट. बिकॉज ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है, we consider it in India, financial account is a part of capital account. Remember this point. So we just have 2 accounts, current and capital, while financial account is a part of capital account. Now, what is a current account? So it is a record of exports and import transactions of goods, services and transfer payments. Many of you must be confused कि transfer payment क्या होता है. So quickly give a glance here. Transfer payment is a payment made or income received in which no goods or services are being paid for, such as benefit payment or subsidy. Basically transfer payment का मतलब हो गया benefit payment या subsidy. और जो examples है transfer payment के वो है welfare, financial aid. मान लीजिए हमें किसी country से financial aid मिल रहा है, मदद मिल रही है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा? ट्रांसफर पेमेंट के अंदर. ठीक है. सो करंट अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट्स. ओके, इट इंक्लूड्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, balance of invisible, that is trade in services, and transfer payments, example as I've already explained it to you. So this is what current account is about. So here you can see a chart here. Trade in goods, trade in services and transfer payments. Trade in goods में export of goods, import of goods. Trade in services में आएगा net factor goods, net non-factor income. Under net factor goods में ये सारी चीज़ें हैं. Net income from compensation of employees, net investment income. Under net non-factor income, shipping, banking and insurance, tourism, software services, etc. Transfer payment में आ जाएगा gifts, remittances, grants, etc. Okay, so this is how current account का structure looks like. Moving on to capital account. Records of all international transactions of assets, bond, FDI, stocks, GSECs, government securities, etc. This is how your capital account looks like. See, investment, external borrowings और external assistance. ये 3 major हिस्से हैं. Investment के अंडर 2 तरह के इन्वेस्टमेंट है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ अस नो इट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? FDI, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. वाइल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में FI, ऑफशोर फंड्स एक्सेट्रा. एक्सटर्नल बोरोइंग्स में क्या होगा? एग्जाम्पल्स एक्सटर्नल बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस में आ जाएगा गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल and bilateral loans, all of that. So ये आपका capital account का component है. I hope it is easy and clear. So it is a record of all international transaction of assets. Okay. While current account में क्या क्या आ जाएगा? Record of exports, imports of goods, services and transfer payments.
Remember this very carefully. About surplus and deficit. What is the meaning of surplus? When do you say that the BOP of India is in surplus or BOP of India is in deficit? So यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अब मैं आपको quickly explain कर देती हूँ. If inflow is more than outflow, that means it is positive, which means BOP is in surplus. What is inflow? What is outflow here? एक अच्छा से एग्जाम्पल देती हूँ मैं, सिंपल ले लो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को आप, ठीक है. सो इनफ्लो का मतलब हो गया व्हेन यू एक्सपोर्ट मोर देन यू गेट मोर मनी, राइट. सो एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट इन दिस केस, देन योर बीओपी इज इन सरप्लस. बट इंडिया में बीओपी इज इन डेफिसिट, विच मीन्स दिस सिनेरियो, इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट. समझ में आया? दैट इज इन नेगेटिव, which means BOP of India is in deficit. Clear? Now, BOP crisis. It is also called a currency crisis. Remember this. ये बहुत important है, काफ़ी बार याद नहीं रहता है, but we all have to remember this. BOP crisis को currency crisis भी बोला जाता है. It occurs when a nation is unable to pay for essential imports or service its external debt repayments. The nation is unable to pay for essential imports or service and it is not able to repay the debt. कोई लोन लिया है तो नेशन अब वो चुका नहीं पा रहा, उतना करेंसी नहीं है उस कंट्री के पास. Typically, this is accompanied by a rapid decline in the value of affected nation's currency. So दो चीज़ें हो रही हैं. Nation is unable to repay what? The loans, and it is unable to pay for essential imports. Okay? Plus क्या हो रहा है? Decline in currency's value. समझ में आया? तो इस सिनेरियो को बोला जाता है BOP crisis scenario. I hope it is easy now. Now, in this situation, the country seeks emergency borrowing from institutions such as IMF. For example, India में BOP crisis आया and उसके बाद LPG reforms आए. मैंने एक I have uploaded a video जिसमें मैंने डिटेल में बात की है कि कैसे अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और से IMF और सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुछ कंडीशंस थे, ठीक है. तो LPG की जो कहानी है वो बेसिकली ये है कि इफ़ यू साइन फॉर दिस कंडीशंस, इफ़ यू अग्री फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ओनली देन वी विल गिव यू लोन. आर यू गेटिंग मी? सो दिस वॉज अ प्रोपोगेंडा बेसिकली बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. उस समय उसको प्रोपोगेंडा कहा जा रहा था. बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की है, आई लिंक दैट वीडियो in the description box so that you can go and watch the entire story behind the LPG reforms. Now moving on, this is a practice question. Which among the following can possibly lead to increase in current account surplus? Now you have to know इस question का आंसर जानने के लिए you should know the meaning of current account, you should know the meaning of surplus. The options are increase on sectoral caps in foreign investments, increase in logistics cost, high input cost on domestic products, or rupee depreciation. What is the right answer? Comment down below. I hope the session was helpful. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि BOP का मतलब क्या होता है, और अगर आगे चल के जितनी भी चीज़ें हमने कवर की इस टॉपिक में, उन चीज़ों से कोई सवाल आता है, you'll not make a mistake. Right? I'll see you in the next video. Till then, do not forget to like, share, comment, and please subscribe to the YouTube channel and press the bell notification to know whenever I'm posting a video, and immediately watch it. It's like just a few minutes ka video, right? You can definitely spend that time even when you're busy preparing. I'll see you in the next one. Bye.